Hello and welcome to Mech Zone. Today we shall be starting with one of very small but important subject of mechanical engineering, that is IC engines. IC engines. So the first we would like to tell you that the full form of IC engines is internal combustion engines. Here the combustion was taking place inside the combustion unit. Although there are external combustion engines also, जहाँ पर आपका combustion unit separate होता है तो वहाँ पर उसका size काफ़ी बड़ा हो जाता था engine का, लेकिन यहाँ पर क्योंकि combustion is taking place inside and hence the size of these engines is generally smaller. So now I will simply draw the diagram such that we have two valves, okay, and this is the piston which is actually reciprocating inside the cylinder. Okay, so this place is called as the top dead center and the bottom is called as the bottom dead center, and we are having a separate unit called as carburetor. This is actually a carburetor, and in the carburetor what we are doing is we are having the air fuel mixture is being made in the carburetor, which is then supplied to as inlet in one of the valves, and here we are getting the air fuel mixture and which is at atmospheric pressure. This air fuel mixture is being input in through this valve by means at atmospheric pressure. Now this is the cylinder and this is actually the connecting rod. This is the connecting rod. This is called as the crank rod and this is called as the crank shaft. Okay, so TDC is generally represented by positive and BDC is generally represented by negative designation. Okay, now we will draw another diagram in which we will show the spark plug. This is actually called as a spark plug, and as the name suggests, the spark plug is mainly responsible for producing a spark. Here what we are getting is, here we are actually having the high temperature compressed matter, high temperature compressed matter, or simply air fuel mixture. And what we are doing here is we are simply adding the heat, or we are actually initiating the heat addition process by means of this spark plug, and here the addition of heat is taking place. Addition of heat is taking place. Okay, and this is the top dead center and this would be the bottom dead center. Okay, this is actually called as the stroke length. This is called as the stroke length. Okay, and heat addition is actually taking place at constant volume. Heat addition is taking place at constant volume. Now if we discuss about the principles of the spark plug, actually the material that is best suited for making the spark plug is platinum. Okay, platinum is the best material. What we are getting here is we are having a positive terminal and a negative terminal, such that for producing a spark, very high voltage difference or potential difference is required. Actually we are applying a very high potential difference between these two terminals, and hence a spark will be produced. Okay, and this will produce a temperature of about 16,000 degree centigrade. Okay, this is the plus terminal and this is the minus terminal. So the electrons will flow from the negative terminal to the positive terminal, and since the voltage is very high, it will produce a spark. So electrons are actually flowing from the negative to the positive terminal, and the current, that is I, is flowing from the positive to the negative terminal. So we have already studied this in class 10 that the direction of current is actually taken opposite to the direction of flow of
electrons. And about how much voltage or potential difference is applied? Around 10,000 volts of potential difference is applied between the terminals of the spark plug in order to produce a spark. So we have to remember one thing, that for melting purpose, we have to keep the value of current very, very high. We need a very high value of current if we are aiming for melting purpose. But if we are aiming to produce a very high potential difference, for high spark, for spark production, we are actually requiring the potential difference should be very, very high. Okay, and this is the principle that we have involved in the spark plug कि हमारा एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 10,000 वोल्ट्स का जब हम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पार्क. हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट डायग्राम और ये था हमारा सेकेंड डायग्राम. फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया? एयर फ्यूल मिक्सचर का इनटेक किया. ठीक है. सेकेंड डायग्राम में हमने इस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करा के हाई टेम्परेचर पे लाए और तब हमने उसमें एक स्पार्क का एडिशन किया और हीट एडिशन प्रोसेस हो गया. अब डेफिनेटली जब यहां पर हीट एडिशन होगा तो गैसेस जो होंगी, एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा वो बर्न करेगा, एंड बिकॉज ऑफ कंबस्टन वेरी हाई प्रेशर विल ऑल्सो बी डेवलप्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये जो हमारा पिस्टन था, पिस्टन विल कम डाउन फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर. तो सबसे पहले हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया. ठीक है, इसके कारण हमारा सक्शन हुआ. फिर हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा जो कि हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगी. And the third process that will happen, we will draw it. These are the two valves. One is the inlet or the intake valve and the other one is the exhaust valve. So the piston is actually again coming from the top dead center to the bottom dead center. Top dead center. This is the bottom dead center. आपने देखा होगा कि ये पोर्शन हमेशा मैंने छोड़ा है, ये वाला पोर्शन जो है इट इज लेफ्ट इन एवरी डायग्राम. व्हाई? बिकॉज दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन बिफोर हैंड. इसे हम क्यों देंगे? क्योंकि अगर आप इसको नहीं देंगे वॉल्यूम को तो आपका जो पिस्टन है वो डायरेक्टली जाके वाल्व्स में भिड़ जाएगा और वाल्व्स में भिड़ेगा तो वो उन्हें तोड़ देगा. इसीलिए ये पर क्लियरेंस वॉल्यूम हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब तीसरे में क्योंकि हमारा कंबस्टन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है तो हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा हमारा पिस्टन एंड एग्जॉस्ट गैसेस विल कम आउट. ठीक है. एग्जॉस्ट गैसेस कहां से आएंगी? 90% ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एस्केप्स आउट. ठीक है. 90% ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस आर एस्केपिंग आउट एंड दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू heat rejection at constant volume. This is the heat rejection process at constant volume. Okay. Now at this moment the temperature and the pressure here are actually greater than the atmospheric temperature and atmospheric pressure. अगर यहां प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ तो यहां से एग्जॉस्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज द प्रेशर इज ऑलवेज और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो प्रेशर. ठीक है. और ये जो हमारा स्ट्रोक है, ये जो यहां पर हमने जो स्ट्रोक ऑब्टेन किया, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक. दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक. एंड जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, द एग्जॉस्ट गैसेस विच आर गोइंग आउट, ठीक है, दे आर 90% तो एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान ही बाहर चली जाती हैं. बाकी की 10% जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तब बाहर जाएंगी. Okay, and heat addition भी और heat rejection both are taking place at constant volume. Now I will draw the fourth diagram, and in the fourth diagram again we are having the movement of the piston from the BDC to the TDC. ये BDC था, यहां से पिस्टन हमारा मूव करके जाएगा टॉप डेड सेंटर पे. और जो हमारी गैसेस हैं, नाउ remaining gases are ejected out. So remaining gases are ejected out. So majority of the gases were ejected out during the expansion stroke only, but जो 10% बच भी गई थी, now they will be ejected out during the
exhaust stroke, and this stroke which is going from down to up, it is called as the exhaust stroke. Okay, it is called as the exhaust stroke. And we should remember that vacuum is actually created during the suction stroke. Okay, vacuum is created during the suction stroke. This is a note point. And this stroke, when the piston is moving from the BDC to the TDC, it is called as the exhaust stroke. Okay, and one important note point is when the combustion is taking place, the combustion is taking place only of the fuel particles. Okay, the combustion is taking place only for the fuel particles, whereas air particles are expanding. Air particles are expanding. Okay, they are actually expanding, but the combustion is taking place only for the fuel particles. Okay, so SI engine, that is the spark ignition engine, it is also called as the petrol engine. Okay, it is also called as the petrol engine. Spark ignition simply means that we are using a spark plug, and by producing the spark we are adding the heat to the air fuel mixture. Now for the figure second that we have drawn, the heat addition is taking place at constant volume, because when the piston is at the top dead center, okay, the sparking is so fast and produces so high temperature that it will ignite the fuel particles at that instant only. इसीलिए जो हमारा process वहां पे हो रहा है, it is taking place at constant volume. And if we go for the figure fourth, then the reason for heat addition at constant volume, fourth and 3. So what would be the reason for heat addition at constant volume in the third and the fourth diagram is that after the ignition of fuel particles is taking place, the exhaust gases are at a very high temperature and pressure. And due to this pressure difference within the atmosphere and the gases which are present inside, the exhaust valve is open and 90% of the exhaust gases are going out during the expansion stroke only. Okay, so this was very important that we have to remember. Next we come to what is actually sparking. So sparking will be there only when we supply a very high voltage across a huge resistance. So हमें याद रखना है कि बहुत high voltage सप्लाई करने पे हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होगा और बहुत हाई करंट सप्लाई करने पे हमारा मेल्टिंग शुरू होगी, मतलब हीटिंग हमें अच्छी मिलेगी, बिकॉज I²RT हो जाएगा वहां पे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग. जूल्स लॉ, हीटिंग के लिए करंट और स्पार्क के लिए वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं. नाउ वी कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मटीरियल सिलेक्शन फॉर IC इंजन. मटीरियल सिलेक्शन for IC engine. So before starting this topic, हमारा जो 4 diagrams में 4 processes थे, सबसे पहला process था suction, दूसरा process था compression, और उसी मोमेंट पे हमने क्या कर दिया था, उसे ignite कर दिया था, तो combustion भी हो गया. थर्ड था हमारा expansion, और फोर्थ था हमारा एग्जॉस्ट. ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस थी जिनके डायग्राम्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे. तो सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन में अगर हम बात करें स्पार्क प्लग की, तो मैंने आपको बताया स्पार्क प्लग का जो मटेरियल है बेस्ट दैट इज प्लैटिनम, बट प्रैक्टिकली निकल इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. ओके, and how much voltage was applied? It was applied about 10,000 volts. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो आंसर इज 10,000 volts. ओके, और लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. तो हमारे स्पार्क प्लग में हम लोगों ने प्लैटिनम क्यों यूज किया था? बिकॉज प्लैटिनम इज हैविंग लेस रेजिस्टेंस एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ प्लैटिनम. ओके, नाउ this pin that you are seeing, this is called as the gurgeon pin. Okay, this is called as the gurgeon pin, and this ring is called as the piston ring. Okay, so this actually covering or this portion is provided with cooling water
cooling water, and this cooling water is generally for 4-wheelers only. 4-wheeler only में ही हम लोग ये वाला पोर्शन है, this is being provided with cooling water for removing the excess heat, and this is actually the cylinder. Okay, this is the connecting rod, and this was the crank rod, and the crank rod is rotating at some angular velocity omega. These are the piston rings, and here we are actually obtaining the compression of the air fuel mixture. I will designate it as AFM, such that pressure of compression is very much high as compared to the atmospheric pressure. Okay, so now we will discuss what are the suitable materials for all these components. So first we will discuss about piston rings. Now in case of the piston rings, these are made of brittle material. Okay, they are made up of brittle material, such that the brittle material is also smooth, because while the movement of this piston, it may undergo some friction between the cylinder walls. तो cylinder walls और piston rod में अगर बहुत ज़्यादा friction हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत friction के कारण आप तो पता ही बहुत सारे losses होने लगेंगे. तो यहाँ पे हमारा friction को कम करने के लिए we are actually using the smooth materials. ठीक है, और मान लीजिए रिंग्स में अगर इस टाइप का कोई फिनोमेना हो गया, ऐसे रिंग्स ऐसे हमारी हो गई, तो यहां से क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है हमारा लॉस भी हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं ब्लो बाय लॉस. दिस इज कॉल्ड एज दी ब्लो बाय लॉस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी ब्लो बाय लॉस. नाउ अब हमारे और भी सारे कंपोनेंट्स बचे हैं. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज पिस्टन रिंग. पिस्टन रिंग ही अभी हम डिस्कस करें. पिस्टन रिंग एक्चुअली किससे बनाते हैं हम लोग, स्टील से बनाएंगे, और इसमें हमारा सिलिकॉन भी एडेड होगा और ग्रेफाइट भी एडेड होगा. और आपको पता है ग्रेफाइट इज हैविंग गुड ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टीज, एंड ग्रेफाइट इज एक्चुअली अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट. Graphite is actually a solid lubricant, and silicon is mainly acting as slip arrestor. ये slip को arrest कर लेता है and thus provides hardness. So on adding silicon to the steel, it becomes hard, and also silicon arrests the slips. And blow by losses क्या था, blow by losses में क्या होगा, the unburnt hydrocarbon will be ejected out. Okay, so this was the blow by losses. Next we come to the gurgeon pin. Okay, or it is also called as piston pin. Okay, so gurgeon pin is actually subjected to tensile also and compressive also. So gurgeon pin is subjected to tensile as well it is subjected to compressive loads. Okay, so since the both type of loads are there, so we need the strength of this gurgeon pin to be very good, and we know that the best strength can be obtained by means of forging, and that too by cold drop forging. Cold drop forging has the highest strength producing component. इससे जो component produce होता है उसकी strength बहुत ज़्यादा होती है, और हम लोग इसमें कोल्ड ड्रॉप फोर्जिंग मतलब लगाते हैं. और इसमें क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लोडिंग होती है, क्योंकि कुछ पार्ट में स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कुछ पार्ट में कंप्रेसिव आएगा. तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, और स्ट्रेंथ जो ज्यादा हम लोग मैक्सिमम ऑब्टेन करते हैं, इट इज इन द केस ऑफ कोल्ड ड्रॉप फोर्जिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पिस्टन एंड सिलेंडर. सो इफ वी डिस्कस what are the materials suited for piston and cylinder. So earlier it was made from the cast iron, but the disadvantage with cast iron was that it was very heavy, hence the inertia was increased, because mass ज़्यादा था तो inertia बढ़ गया, और more power was required to drive it. More power was required to drive, और इसके कारण हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, वी ऑब्टेन्ड लेस माइलेज.
हमारा माइलेज जो हो गया वो काफी कम हो गया। ये कहां यूज होता है? ये होता है हमारी शेवरले की कार्स में। शेवरले की कार्स में एक्चुअली कास्ट आयरन ही यूज होता है, बिकॉज वहां पे वो लोग माइलेज पे ध्यान नहीं देते, वहां पे वो लोग स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं। बट हमारा ये कास्ट आयरन वॉज रिप्लेस्ड बाय एलॉयड स्टील। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय एलॉयड स्टील, एंड एलॉयड स्टील का एडवांटेज थोड़ा क्या था? इट वॉज लेस हैवी, एंड हैवी क्योंकि कम था तो यहां पर क्या पड़ गया? वी वर एबल टू इंक्रीज द माइलेज। और फर्दर इसको हमने किससे रिप्लेस किया? दिस वॉज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम अलॉय। दिस वॉज फर्दर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम अलॉय, और उसका नाम था डुराल्यूमिन। और ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड था, कनेक्टिंग रॉड वाज सब्जेक्टेड टू बोथ सिग्मा टेंसाइल एंड सिग्मा कंप्रेसिव, और सेम हमारा क्रैंक रॉड के साथ भी था। तो क्योंकि यहां पर भी हमारा साइक्लिक रिवर्सल लोडिंग आ रही, तो दिस विल बी ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कोल्ड ड्रॉप फोर्जिंग। ओके, और अगर हम बात करें तो हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है, इट इज मेड अप ऑफ द हाई स्पीड स्टील, और हाई जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसका मेन फेलियर कहां हो सकता है? एट द वर्लिंग स्पीड। और वर्लिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने थ्योरी ऑफ मशीन्स में ऑलरेडी अपने पढ़ रखा है। अगर हम बात करें गर्जन पिन की, इफ वी टॉक अबाउट द गर्जन पिन, then it is subjected to completely reversal loading condition, which is the most dangerous condition for fatigue failure। जो हमारी completely reversal condition होती है वो हमारी fatigue failure के लिए responsible होती है। Okay, that is why it should be made of very strong material by forging। तो जहां पर भी completely reversal case आ गया, वहां पर मटेरियल सिलेक्शन का कंसिडरेशन इस तरीके से होगा कि इट इज ऑलवेज मेड बाय फोर्जिंग, बिकॉज फोर्जिंग एक ऐसी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इज अचीव्ड। ओके, सो एंड आफ्टर दिस टू रिमूव ऑल द सरफेस डिफेक्ट्स वी हैव टू परफॉर्म मशीनिंग ऑल्सो। उसके बाद हमें मशीनिंग भी यूज करनी पड़ती है। सो देयर इज अ नोट पॉइंट, एंड द नोट पॉइंट इज connecting rod and the crank rod is also made up of forged steel, but specially by drop cold forging। तो drop cold forging का अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाले कंपोनेंट्स की जो हमारी स्ट्रेंथ रहेगी वो बहुत ज्यादा रहती है। ओके, so with this we come to the end of this lecture. In the next lecture we shall be starting with some fundamentals on IC engines, and we will see how we can be able to solve the numericals also। So आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, so that your friends and colleagues are also benefited, because everything is available absolutely free on this channel। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी चैनल ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जहां इतना एक्सटेंसिव और इतना वाइड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, and that too absolutely for free। So thank you so much।